So kindly give me, the question is kindly give me some points on rehabilitation of alcohol and substance use for लॉन्ग केस. लॉन्ग केस डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने बताई है वैसे ही आपने उसको डिस्क्राइब कर देना है. उसके बाद रिहेबिलिटेशन ऑफ अल्कोहल एंड सब्सटेंस मिसयूज. तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोसाइकोसोशल इन्वेस्टिगेशंस. सो बायोलॉजिकल जो उसके इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ऑडिट है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सीवा देखना है कि जी उसमें वो विड्रॉल में तो नहीं जा रहा पर्सन. फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली देखना है कि जी उसमें डिप्रेशन साइकोसिस तो नहीं है. Both in alcohol as well as substance, psychosis can be there, depression can be there, so you have to rule out both. And then the social bit, what are the complications of the alcohol and substance misuse or of that person. Complications क्या हो रही हैं biologically, means कि उसमें उसका liver damage हो रहा है, उसका प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन जा रहे हैं, या फिर प्लेटलेट्स ऊपर चले गए हैं. समटाइम्स यूजुअली दे गो डाउन, but it can go either way. Neutrophils especially, platelets usually go down, neutrophils usually go up. Neutrophilia तो नहीं हो रहा, कोई भी biological complication हो रही है, pancreatitis हो रहा है, Korsakoff psychosis हो रहा है, alcohol related dementia some cases में हो रहा है. तो वो सारी जो उसमें आपने बायोलॉजिकली सारी चीजें रूल आउट करनी है. साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन साइकोसिस हो गया. और उसके बाद सोशल कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है कि जी मैरिज ब्रेकडाउन, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हो रहा है. देन वी कम टू दी देन आफ्टर द फाइनेंशियल ब्रेकडाउन. फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जी ये लोग चोरियां शुरू कर देते हैं, शॉपलिफ्टिंग शुरू कर देते हैं. नॉट ओनली इन ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसा होता है. जाएंगे शॉप में से कोई ना कोई चीज चुरा लेंगे, कोई ना कोई चीज जो है वो जाके बाजार में बेच देंगे. इट हैपेंस इन ऑल कंट्रीज, नॉट ओनली इन पाकिस्तान और इंडिया. तो ये चीजें होती हैं, शॉपलिफ्टिंग और माइनर क्राइम्स. फिर मेजर क्राइम्स हैं उसके बाद कि जी कानून अपने हाथ में ले लिया, किसी को पीट दिया, कोई सीरियस क्राइम कर दिया. तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं, फाइनेंशियल हो सकती हैं. फिर जो है वो ऑक्यूपेशनल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि जी दे लूज देयर जॉब बिकॉज ऑफ देयर एंड अल्कोहल एंड the substance misuse. They can even use their job. So loss of occupation can be there. तो ये सारी चीजें पहले आपने डिटरमिन करनी है मैनेजमेंट में. देन यू कम टू दी रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन में सबसे पहले तो यह है कि अगर आप बायोलॉजिकली आप शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो फर्स्ट तो आपने उसको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोवाइड करनी है. आफ्टर प्रोवाइडिंग डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द delirium tremens, prevention from the Wernicke-Korsakoff syndrome. Wernicke-Korsakoff will be a little bit delayed, will happen after a few weeks, while delirium tremens can happen in the immediate withdrawal phase. तो उसके लिए आपने thiamine देनी है. Thiamine can be oral or injectable. Injectable is better. IV is better than IM. But IM is better than oral. It depends on your local hospital policy, whether your hospital wants to give intramuscular or not. Go with your hospital policy. So otherwise, go for IV. Agar IV की भी policy नहीं है, then go for very high dose of oral thiamine plus B complex. Not only thiamine, क्योंकि इसमें other बी के और भी आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर B5 एंड B12 एटसेट्रा. तो वो सारे भी आपने उसके बी कॉम्प्लेक्स देना है.
विटामिन सी भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो जो हम इंजेक्टेबल थायमीन देते हैं उसमें सारी पेरिडॉक्सिन और ये सारी चीजें शामिल होती हैं। दैट्स वाई, एंड इट कम्स इन 2 वाइल्स। एक वाइल में मुख्तलिफ बी वाइटामिन होते हैं और दूसरी वाइल में दूसरे होते हैं, और ये इन्फ्यूजन की फॉर्म में दिए जाते हैं, और समटाइम्स इंट्रामस्कुलर वन आफ्टर अनदर। So that's how you do the Pabrinex, means injectable vitamins. Then you give the detox with the Librium or chlordiazepoxide. ये आपने दे दिया, और usually these 2 things are enough, but then you go with the complications. अगर तो उसमें सीजर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है already, so you may consider carbamazepine, but usually, especially if they're already on carbamazepine or valproate, otherwise not. Avoid valproate in the females with the childbearing age. So that's about the carbamazepine and or valproate, and seizure prophylaxis के लिए. और then so then you monitor their mood. अगर उसमें उनका मूड लो जा रहा है, कंसिडर एंटी डिप्रेसेंट्स। और अगर उनमें साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, कंसिडर the consider antipsychotics very strongly, because alcohol use की वजह से or substance misuse की वजह से, so definitely psychosis symptoms are more common than depression, while in alcohol it's other way around. But even in alcohol, psychosis can occur. The examples are alcoholic hallucinosis, and also delusional disorder related with alcohol, particularly with the delusions of morbid jealousy. तो एंटीसाइकोटिक्स आपने कंसिडर करनी है अल्कोहल सब्सटेंस मिसयूज में, और देन आफ्टर दैट you are then we come to the social points. So social points is you check the motivation of the person. So motivational interviewing, how motivated they are, and whether they are tell them basically motivational interviewing is tell them about the advantages and disadvantages of alcohol and substance, pros and cons. Pros may be that they get temporary pleasure out of it. They might get some company with the friends, and then cons, they have left their job, their wife, their spouse has left them, they're got depressed, they have gotten 2 serious suicidal attempts, and if not caught in time, they might have died from that suicidal attempts. They had a serious platelet deficiency, their liver is going, they were about to go into hepatic encephalopathy. ये सारी चीजें मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में आपने उनके साथ डिस्कस करनी है। उसकी मेमोरी इफेक्ट हो रही है, उसके लीगली वो जाके तो वो हर दूसरे चौथे दिन जाके एक्सीडेंट कर देता है, उसमें ड्रंक ड्राइविंग के चार्जेस हैं उस पे। तो ये सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करनी है कि जी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। or then after motivational interviewing, you will then you will so that's what the addiction counseling is about. It's about the motivational interviewing, plus the addiction counselor may counsel for the some of the psychological complications of alcohol misuse. अगर साइकोलॉजिकल उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो वो जो काउंसलर है वो उसके साथ उसमें may provide some CBT approach. Otherwise, then the cognitive behavioral therapy for the comorbidities. If the hallucinations are very much distressing or the delusions are very distressing, then maybe CBT for psychosis. If the depression is very strong, then maybe CBT for depression. If there are anxiety or panic symptoms, CBT for anxiety.
So cognitive behavioral therapy. If there is a comorbid personality disorder, then think of the psychodynamic psychotherapy there. Uh, uh, if there is a self harm, consider DBT. ये सारी चीजें rehabilitation में आपने mention कर देनी है. Then after that, if they feel that they can't sustain themselves, uh, and they can't stop themselves from drinking alcohol in the community, they may think of the residential placement. तो यहाँ पे अब आपका रेजिडेंशियल जो है वो रिहेबिलिटेशन का आएगा कि जी आप उनको 28 days के लिए आप भेज देंगे एक थेरेप्यूटिक कम्युनिटी में इन विच दे आर अवे फ्रॉम alcohol and substance. In Pakistan, often this is the first step. Very often कि जी आप यहीं से शुरू करते हैं. If you start from the therapeutic community, you have to start from with the detoxification, with the use of parenteral thiamine and parenteral vitamins and their chlordiazepoxide. और उसमें जो है वो then in that therapeutic community, they continue to have the vocational rehabilitation. वो कुछ ना कुछ वहां पे कुछ दस्तकारी करेंगे, कोई छोटी मोटी चीजें बनाएंगे, कोई पैकिंग में हाथ बटा देंगे, कोई अगर वो फील्ड्स के करीब हैं तो हो सकता है वो काश्तकारी में हाथ बटा दें, कुछ एग्रीकल्चर में हेल्प कर दें. Any help they can use with the rehabilitation. So they will have the occupational therapy there, and they will have the ongoing motivational interviewing there. So that's how it will be the rehabilitation of alcohol and substance use. Now, another part, because you have mentioned the alcohol and substance use, then so in alcohol and substance misuse, so basically in substance misuse, especially with the opioids or the injectables, there is a chance, or injectable cocaine, injectable heroin, there is a chance that they may have developed AIDS or hepatitis B or C. So you have to liaise with the microbiologists and the physicians who are treating their infective diseases such as HIV or the hepatitis B or C. So rehabilitating them from that point of view will also come in that. Then again, working with their families and getting them back to a job or a healthy lifestyle, and doing family therapy. So treating the family as a unit, especially in our country, Pakistan, it's very important. So I think this is what I can remember.